Right, welcome to the special program. Elections are over in Uttar Pradesh. New Chief Minister has just been sworn in, and it was on the BJP's manifesto to try and find some sort of a resolution for the Ram Mandir issue at Ayodhya. And today the Supreme Court essentially saying this is not something that the court should decide. It is something that the party should speak and take a view on, although mediation can be provided if really required. Now, of course, the parties have been trying to sort this out for a really long period of time and haven't yet succeeded. But today on this show, we're going to be talking to a range of experts leading from Zafri Iran. We're going to be having Manishankar Iyer right out here and a number of other people we're going to be speaking to, including JVL Narasimha Rao, to try and get a sense of what the possible solutions could be for Ayodhya, if indeed it is possible to have a conversation and or mediation. But before we go to any of them, earlier in the day, I spoke to one of the people who was a key figure in the Ayodhya movement in 1992, somebody who was there when the Babri Masjid was demolished on the 6th of December 1992, and somebody who's almost been a face of Ayodhya and everything around it. Now, of course, a union minister and somebody who is a very key part of this particular government, Uma Bharti. So a little earlier in the day, I spoke to Uma Bharti about Ayodhya, about Yogi Adityanath, and about some other issues. Here's what she had to say to me. उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं। वैसे तो बहुत चीज़ों पर बात करना है, योगी आदित्यनाथ पर बात करना है, गंगा पर बात करना है, विकास पर बात करना है, पर अगर शुरुआत करें अयोध्या के साथ, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों को बैठकर किसी न किसी तरह एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो इस पे आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है वहाँ क्या किया जाना चाहिए? हमारे मैनिफेस्टो में हमने पहले ही कहा, हमारा इस विधानसभा चुनाव का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें ये बात थी कि राम मंदिर का समाधान या तो लेजिस्लेशन से होगा और या फिर आपस की बातचीत के जरिए होगा। इसलिए क्योंकि विक्रम, अगर आपको याद रहे ये बात कि जो मूल लड़ाई का मुद्दा था वो था कि ये राम जन्मभूमि है या नहीं। इसी पर 500 साल लड़ाई चली है, इस पर लाखों लोग मरे हैं। इस पर मैं खुद अयोध्या में गोली खाने के लिए, मर जाने के लिए तैयार थी। मैं बांदा की जेल तोड़ के चली गई थी इसी बात के लिए कि हाँ, जहाँ रामलला बैठे हैं वही राम जन्मभूमि है। इस पर 2011 को जो फैसला आया 3 जजेस की बेंच का, जिसमें उन्होंने इंडिस्प्यूटेडली कहा कि जहाँ रामलला बैठे हैं वो जगह रामलला की ही है, तो हमारे आंदोलन को तो उसी दिन समग्रता प्राप्त हो गई थी। अब बात रह गई थी मंदिर के निर्माण की, तो बात आ गई थी कि डिस्प्यूट ऑफ लैंड, यानी आज के समय पे मालिकाना हक किसका है। तो मालिकाना हक जो होता है ज़मीन का, उसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी होता है और कोर्ट में भी सेटलमेंट होता है। तो आज माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि आपस में बातचीत के द्वारा हल करने का प्रयास करो, जो कि भारतीय संविधान में होता है, संभव है। सोमनाथ के मंदिर का निर्माण भी हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यही रास्ता निकाला था सोमनाथ के मंदिर का। जी उमा जी, अगर आपको याद होगा 1992 में अयोध्या में आप भी थी, पत्रकार की हैसियत से मैं भी वहाँ था। कई बार हमने वहाँ मुलाकात की थी और बातचीत की थी, और उस समय लग रहा था, आपने भी कहा था कि ये ऐसा मुद्दा है जो बातचीत से शायद नहीं हल हो पाएगा। तो अब 25 साल गुजर गए हैं, अब आपको लगता है कि बातचीत से किसी न किसी तरह इसका एक सुझाव निकल सकता है? आपको मैं फिर याद दिलाऊं, मैं देख रही हूँ मीडिया में जो मुझसे सवाल कर रहे हैं वो उसको भूल जाते हैं कि इस मामले के 2 हिस्से थे। एक था कि वो राम जन्मभूमि है या नहीं, और दूसरा है कि वर्तमान में मालिकाना हक किसका है। तो राम जन्मभूमि है, ये बात जब हाई कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने ये बात कह दी कि ये राम जन्मभूमि है जहां रामलला बैठे हैं, उसको इस देश के दोनों समुदायों ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांति से उस फैसले को स्वीकार कर लिया। और आगे जो चैलेंज हुआ है वो दूसरे डायनेमिक्स में चैलेंज हुआ है और डिस्प्यूट ऑफ लैंड है अब वो। इसलिए आप जो बात कह रहे हैं वो बात सेटल हो चुकी, हमारी बात सही साबित हुई कि जहां रामलला बैठे हैं वही राम जन्मभूमि है। हमारा सैकड़ों सालों का आंदोलन उस दिन सफल हो गया था, मेरी जिंदगी उसी दिन धन्य हो गई थी। उमा जी, पर अगर आप कोर्ट की बात को देखें और अगर कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन की बात अगर होनी चाहिए, तो एक जमाने में आप कहती थी मंदिर वहीं बनेगा। अब क्या आपको लगता है कोई ऐसा सोल्यूशन पॉसिबल है जैसे कि जहां रामलला विराजमान है मंदिर शायद वहीं नहीं बने, थोड़े हट के बने, ताकि दोनों साइड खुश हों? क्या ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है? जहाँ रामलला बैठे हैं, जो जगह राम जन्मभूमि है, और हमने ये कहा था कि जहाँ रामलला बैठे हैं वही राम जन्मभूमि है, उस पर तो कोर्ट की सील लग ही चुकी है। और अब जो डिस्प्यूट ऑफ लैंड सेटल हो रहा है उसमें मालिकाना हक की बात हो रही है अब तो, इसलिए ये बात तो अब उठेगी नहीं ना विक्रम आगे।
तो अगर ये आपसे तो सिद्ध हो गया कि वो राम जन्मभूमि है जहां रामलला बैठे हैं। अच्छा, तो अगर आपसे कोई सलाह पूछे कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए इसमें, तो आप क्या एडवाइस देंगे, आप क्या सलाह देंगे? मैं कैसे सलाह दे सकती हूँ? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस इस पर चल रहे हैं तो मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं हो सकती है। मुझे तो एक बात मालूम है कि जहाँ रामलला बैठे हैं वहाँ मंदिर का ही निर्माण होना है, इस पर मेरा अटूट विश्वास है। पर उमा जी, इतने सालों से ये बात चली आ रही है और जिस दिन चुनाव खत्म हुए थे, जब काउंटिंग डे था, मैंने आपसे बात करी थी और आपने कहा था कि अब 25 साल गुजर गए हैं तो कोई ऐसा सोल्यूशन शायद निकलना चाहिए जिससे कोई भी नाखुश नहीं हो, हिंदू भी नाखुश ना हो, हिंदू मुसलमान भी खुश हों। तो अगर ऐसा कोई सोल्यूशन निकलना है तो वो क्या सोल्यूशन हो सकता है जिससे सब खुश हों? हाँ, मैं आज भी ये मानती हूँ कि ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है। ऐसा बहुत जगह पर हुआ है। पाकिस्तान में कई जगह पर मस्जिदें तोड़ दी गई, मॉल बना दिए गए। तो इसलिए ये तो एक पुराना ढांचा था जिसमें नमाज ही नहीं पढ़ी जाती थी। तो मुझे लगता है कि रास्ता निकाला जा सकता है। मुस्लिम समाज रास्ता निकालने के लिए तैयार भी हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को मान सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में कोई बात चल रही है। इसलिए मैं अभी अपनी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ ना। मेरी टिप्पणी नहीं करने का जो रीज़न है वो मेरे विचार में कोई बदलाव नहीं है। उसका कारण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस प्रयास को कर रहा है कि बातचीत से समाधान हो जाए, तो मैं बीच में नहीं बोलना चाहती हूँ। अच्छा उमा जी, तो अभी आप इस पर और कुछ नहीं बोल रही हैं और फिर देखना पड़ेगा कि बातचीत कैसे हो सकती है। अब आप देखेंगे जो दूसरा बड़ा मुद्दा है, योगी आदित्यनाथ ने अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभाला है। आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? वो जो आप बोझ संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश का, उनको मैं क्या उनको करना बिल्कुल चाहिए? सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि वो बहुत योग्य व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति हैं। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, पूरी पार्टी ने, विधायक दल ने बिल्कुल एक सही व्यक्ति का चुनाव किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद के लिए। उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह की आवश्यकता है ही नहीं। वो जो भी रास्ता निकालेंगे वो सबसे अच्छा रास्ता होगा। पर उमा जी, अगर आप देखेंगे तो जो आपका अपना उदाहरण है, आप एक बार आप साध्वी थी, आप भगवे कपड़े में, आप फिर असेंबली में गई थी, आपने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का बोझ संभाला था वहाँ। तो जो योगी आदित्यनाथ को अभी करना है, तो एक तरह से वो आपके जीवन से भी उदाहरण ले सकते हैं। तो अब आप उनको क्या कहेंगे कि जो आपने देखा था, जो आपने किया था? विक्रम, मैं एक तरह से साध्वी नहीं हूँ, मैं हर तरह से साध्वी हूँ। क्योंकि मैंने जो सन्यास की दीक्षा ली है अमरकंटक में, वो अपना पिंडदान करके, अपना तर्पण करके, अपना मुंडन करके जो परंपराओं से सन्यास लिया जाता है वैसे लिया है। और सन्यास लेने का फैसला मेरी निजी जीवन शैली है। जैसे आपने फैसला लिया कि विवाह करना है, हमने फैसला लिया कि सन्यास लेना है। इसका संबंध इससे बिल्कुल नहीं होता है कि हम कैसे प्रशासक होंगे। मैंने मध्य प्रदेश में जो बातें तय की, शिवराज जी की सरकार अंत में उन्हीं बातों पर चली और उन्हीं बातों पर चल के ही वो 2 चुनाव आगे के जीत पाए। इसलिए योगी जी योगी हैं तो वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए योगी हैं, बाकी जनता के लिए वो एक सक्षम मुख्यमंत्री होंगे, सफल प्रशासक होंगे। पर खास तौर से उमा जी, ये जो बात पे चर्चा हो रही है जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो यही है कि उनके कुछ ऐसे बयान थे जिससे शायद जो अल्पसंख्यक हैं, खासतौर जो मुसलमान हैं, वो शायद थोड़े डरे से हैं, थोड़े घबराए से हैं कि अब हमारे साथ क्या किया जाएगा वहाँ उत्तर प्रदेश में। ये बहुत छोटे दिमाग के लोग हैं जो ऐसी बातें फैला रहे हैं, और जो ऐसी बातें फैला रहे हैं वो हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। और योगी जी गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, बहुत बड़े परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो सबको साथ लेकर के चली है। ऐसी फैलाने वाले लोग देश का नुकसान करना चाहते हैं, देश में फूट की राजनीति करना चाहते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ था तो उमा भारती और योगी आदित्यनाथ पैदा नहीं हुए थे। हाँ, ये बातें करने वाले लोग जरूर उस समय पर मौजूद थे जब भारत और पाकिस्तान बना था और धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। तब वामपंथी भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे और कांग्रेस भी थे। हाँ, हम लोग नहीं थे। अब हमारे होते हुए कोई विभाजन नहीं हो सकता। नहीं, तो उस पर यही सवाल उठता है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा है, इतनी बार कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो जब उत्तर प्रदेश में अब सबका साथ या सबका विकास होगा, वहां जो विकास की बात चलेगी, तो यही सवाल है कि क्या हर एक के साथ वही बर्ताव किया जाएगा? अगर कोई गरीब हिंदू है या गरीब मुसलमान है, उनके साथ क्या वही बर्ताव किया जाना चाहिए और वही बर्ताव होगा? ऐसे बार बार आप हमसे गंगाजली क्यों उठवाते हैं? ऐसा करके आप भी विभाजन पैदा करते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हम हर गरीब के साथ हैं, तो मुसलमान के भी साथ होंगे। उसमें मुसलमान का गरीब होना आप अंडरलाइन क्यों करते हैं? और ऐसा अंडरलाइन करके आप खुद डिवीजन की लाइन क्यों क्रिएट करते हैं? एनडीटीवी इतना फाइन टीवी चैनल है कि आप खुद एक अंडरलाइन कर रहे हैं। गरीब गरीब होगा, हिंदू होगा चाहे मुसलमान होगा, हम सबका ध्यान रखेंगे, तो सवाल दवाई करवाएंगे। हम पूछेंगे ही नहीं तुम कौन सी जात के हो, एफआईआर में नहीं पूछेंगे कौन सी जात के हो।
दवाई में नहीं पूछेंगे, पढ़ाई में नहीं पूछेंगे तुम कौन से जात के हो, बल्कि इसको अंडरलाइन करके डिवीजन क्रिएट कर देते हैं। नहीं, तो सवाल यही है कि हर एक के साथ वही बर्ताव होगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जहां जहां हमारी सरकारें हैं, एक मुसलमान छोड़ के नहीं भगा, और जब पाकिस्तान बटा तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा उमा जी, अगर एक और मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करें तो ये जो आपने गंगा को साफ करने की बात जो उठाई है, अभी अभी कोर्ट ने कहा है कि गंगा एक लिविंग एंटिटी है, यानी कि वो एक तरह से इंडिविजुअल है, उसके अपने हक हैं। तो इसके बाद जो आपने काम किया का संकल्प लिया है कि गंगा को साफ करना है, वो काम क्या ज्यादा आसान हो जाएगा? थैंक यू विक्रम, आपने इतना प्यारा सवाल पूछा जिससे मेरा दिल छू लिया आपने। वास्तव में ये जो बात कही है उत्तराखंड हाईकोर्ट के माननीय जज साहब ने, मैं उनकी बहुत बहुत वंदना करती हूँ कि उन्होंने गंगा और यमुना के जीवित अस्तित्व को स्वीकार किया, और इससे आगे जो अब हमारी लड़ाई होनी है अविरलता और निर्मलता के लिए, उसमें उनके ये वक्तव्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब अथॉरिटी का गठन कर दिया है, और पहले कुछ चीज़ें थी जो सोसाइटी के पास में नहीं थी, गंगा के लिए सोसाइटी बनी हुई थी NMCG, अब अथॉरिटी को पूरी तरह से एम्पावर कर दिया गया है। इसलिए उत्तराखंड कोर्ट का ये फैसला और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अथॉरिटी का गठन किया जाना, ये बिल्कुल एक सुर में है। अब गंगा अविरल भी होगी और गंगा निर्मल भी होगी, मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो उमा जी, अब तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, वही भाजपा की सरकार है। तो अब क्या आपको लगता है ज्यादा समय नहीं लगेगा जिसके पहले गंगा जी को साफ किया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं न्याय करूंगी 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। मुझे उत्तराखंड से, झारखंड से, बंगाल से, बिहार से पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी जब हमारी सरकार थी, मुझे खाली उत्तर प्रदेश से प्रॉब्लम थी। लेकिन उस समय पर हमारे यहाँ एक चीज़ थी जो कम थी, वो ये थी कि हमारी जो गंगा की जो थी वो सोसाइटी थी। सोसाइटी को मिनिस्ट्री के चक्कर काटने पड़ते थे अपनी फाइलों के अप्रूवल के लिए, और CPCB के पास में सेक्शन 5 की पावर थी। अब एक नोटिफिकेशन के जरिए प्रधानमंत्री ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया और सोसाइटी को अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। सेक्शन 5 की पावर हमें दे दी है, और सोसाइटी अथॉरिटी को ही 1000 करोड़ तक के खर्च करने की पावर दे दी है, और उसकी मॉनिटरिंग और स्क्रूटनी के लिए उसकी टीम बना दी है, वहीं की अथॉरिटी के अंदर ही बना दी है। इसलिए इसमें आपको 8-9 महीने का डिले दिखेगा। जो टाइमलाइन थी फर्स्ट फेज की, उसमें 8-9 महीने का डिले दिखेगा, लेकिन जो लास्ट फेज की टाइमलाइन थी वो 1 साल पहले हो जाएगा। ठीक है उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात करी और आपसे जल्द ही मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। Right, that was Uma Bharti speaking to me a little earlier in the day. Well, we're now being joined by Dr. SQR Ilyas, who's a member of the Muslim Personal Law Board. Also with us, Manishankar Iyer, and we do have GV Narasimha Rao with us as well. Dr. Ilyas, if I can just start with you, taking off from what Uma Bharti just said, where she essentially said that, look, the question of the birthplace of Ram was settled by the Allahabad High Court, and therefore it's only an ownership question right now. Essentially saying that if there is to be a dialogue, it's for the Muslim community now to make some concessions and allow the construction of the temple to come up. You heard what she said. How would you react to it? Basically, the case before the Allahabad High Court was of the title case, and the Allahabad High Court would have settled this issue on the basis of land record, revenue record. Unfortunately, the court has thrown out the case of Sunni Waqf Board, saying that it is time bar, and they have decided this issue on the basis of Astha. That's why we approached the Supreme Court that the issue was not correctly settled, and now let the Supreme Court intervene and settle the title suit. So we don't accept this what the Uma Bharti is saying. Basically, the issue is still open, and it is for the Supreme Court to finally adjudicate the case. No, so now that the Supreme Court has said today that both sides should meet and talk it over, are you saying that that's not something that is feasible, it's not possible? I mean, actually, both sides have been trying to talk for a long period of time and they haven't succeeded. No, I'm not saying that. I am not saying that. If the Supreme Court is ready for the mediation, we welcome it, but the mediation will be based on the basis of the concrete proof. Both the sides should bring the proof, whatever they are having. Their claim, for example, the Babri Masjid people, they say that it is a Babri Masjid. Till 1949, the mosque was there, and the worship was going on, the namaz was going on. On 22nd December, superstitiously, the idols were kept inside the mosque,
and it has we been know the blocked. history. We've of course So- gone into the so history of the- this in the great length. issue- Are you saying that you're not accepting Uma Bharti's point of saying that let's start with the presumption of what the Allahabad High Court said, that this is the birthplace of Lord Ram? You're saying we shouldn't start with that, go back to square one. Is that what you're saying? No, I am saying that the title suit has not yet been decided. Let the Supreme Court decide the title suit. If the Supreme Court wants that this case should be amicably settled by negotiation, then again our issue is that Babri Masjid was not built on any temple. No temple has been demolished since 1528 till 1949. There was no dispute on Babri Masjid. There was a chabutra outside Babri Masjid where idols were kept and the puja was going on. So, what happened unfortunately on 22nd December 1949, the idols were taken inside the masjid and masjid has been locked. So, the issue which has to be resolved is that the title belongs to whom, and let the court decide. Unfortunately, the Allahabad High Court did not decide the title suit, and now it is for the Supreme Court to decide the title suit. If the Supreme Court think that the issue should be settled by the negotiation, we welcome it. Let the negotiation should be based on some evidences and not on the basis of astha. If the people say that it is sentimental issues, thousands and crores of the people have an astha, and the Supreme Court should decide on the basis of astha, that is not the correct position. All right, and whatever Uma Bharti is saying and what the Sangh Parivar is saying. Right. Let's get the other two in now. And what the BJP is taking the position. Right. I got to Dr. Ilyas. Let's get the other two in. Manishankar Iyer, GVL Narasimha Rao. Manishankar Iyer, this is of course during the Rajiv Gandhi government which you were a part of, when actually those locks were thrown open in 1989, which accelerated this. Looking at the present situation right now, logically, feasibly, which of these is likely to provide a solution? Actually, there are four possibilities. One is that the two parties sit together and discuss it. Number two is mediation. Number three is that the court will take a view on this. And number four, perhaps the most likely, is the can just continues to get kicked down the road, as has been happening for a long period of time, 25 years. You know, if only Uma Bharti had sounded this note of sweet reasonableness back in 1988, 89, 90, then maybe one could trust her credentials. But she was hers was one of the most raucous voices. She is 25 years older now and therefore more mature. That may be, but over the course of the last 25 years, that building has been demolished. And it has been demolished in a completely illegal way. And now, whether Ram was born in Ayodhya or not is not the question. The question is, what is the basis for saying that he was born at the precise spot where the Mehrab She says that the existed? High Court has said that's what it is. So The High Court may have said it. We had recommended back in 1990, when I say we, I mean Rajiv Gandhi had recommended, that there should be a reference to the Supreme Court made by the President of India under a provision of the Constitution which renders the conclusion of the Supreme Court is mandatory. That was never followed. That was never accepted. Also, does this land belong to Ram or does it belong to a party who's a party to the dispute? Well, the Allahabad High Court said divided three ways. People didn't like that. The matter is still live inside the court. Yeah, so this is an observation that has been made, and while it is common and natural for out of court settlements to be made, I don't see how, with her saying, I have changed my mind on nothing. I still believe the same things that I used to. What ground is there for an out-of-court settlement? So, GVL Narasimha Rao, let me come to you on that point, because you now have, in a sense, the onus of trying to see what the next steps are. Your own electorate is going to be saying there's now a BJP government at the center, there's a BJP government at the state level. Yogi Adityanath said very clearly, I'm going to try and sort this out. It's in your manifesto, you're going to try and sort it out. And the court today has, in a sense, said, we're not stepping into this right now, you try and figure it out. Given that both the sides still seem to have the same intractable positions as they've had all along, what's the way forward, if any? Other than just forgetting about it, hoping that another 10 years will pass.
there are certain issues which cannot be contested at all. And unfortunately, and I find the representatives on your panel not even willing to believe archaeological and historical evidence. I think in 2003 itself, the Archaeological Survey of India, under the instructions of the Allahabad High Court, had carried out excavations and submitted that there was a temple underneath the disputed structure, the Babri structure. There was a temple below that. Yeah. And also it was a judgment. It is the GVL, if I may interrupt, these are matters that we have. I mean, we're not going to resolve this on a television debate, right? But the actual no, but that's the crux of the problem. You see, if the litigants in this case want to see this purely as a land dispute, I think you cannot resolve it. This is not the kind of a perspective with which Honorable Supreme Court addressed this issue today. So the Chief Justice of India no less says this is a matter that concerns sensitivities and sensibilities of people, emotion of people, okay. and this emotion is based on historical evidence, archaeological evidence. All right, And Dr. to Ilyas, I have on occasion into a land dispute is being extremely, I think, inimical to the emotions of millions and crores of Hindus. Okay. I think, therefore, I would request others to not see this purely as a dispute, title dispute. Right. Now, Dr. Ilyas, I'm again coming back to the question of how any solution can be found. So either, as GVL is saying right now, look at the evidence and let the court sort it out, because people will not agree on this, let the court sort it out. Or you get a third-party mediation, that's also possible, forget about it. I'm just seeing if there's any scope at all for a negotiated settlement after 25 years, given the fact, of course, that the Babri Masjid has already been demolished. There's no structure there right now. So I've heard some people suggesting, for example, let the sides stick together, let's try and find a compromise. Let, for example, the Muslim side say, all right, now that the mosque doesn't exist there anymore, let the temple be built out there, get other assurances, for example, like Kashi will not be touched, Mathura will not be touched, and those remaining 299 mosques will be forgotten about. Try and get some sort of a negotiated settlement like that. Is that at all possible, or is it not even worth trying? No, it is not correct. The thing is that once a mosque is built, it is always a mosque. You know, a mosque is not just a place of muds and bricks. It is a place which has been given for the mosque. Our position is that a mosque cannot be built on illegal land. A mosque cannot be built by acquiring a land forcibly. A mosque cannot be built on demolishing a masjid. So we say that Babri Masjid was never built on the demolished mandir. So this is one thing. Second thing is that if we want an amicable solution, the amicable solution can be prior, whatever the position what existing prior to the 22nd December 1949 means adjacent to the masjid there was a chabutra on which Ram Lalla was there, and adjacent to that there was a mosque. If we want to resolve this issue, this possibility of going back to the status quo can be achieved. All right. I'm not sure, Manish Ranganayya, do you have any hope that any of these negotiated, are any of these at all possibilities? Both sides are very entrenched positions, and I don't see either of them agreeing after 60 years. I'm a great believer in negotiations and talks, not just between these two people, but between the dissidents in Kashmir and the government of India, between the government of India and the government of Pakistan. So I can't be probably as difficult inconsistent to with resolve that. as any of that. But in this particular case, there is an aggrieved party, and that aggrieved party is being told to forget all his grievances and come to the table and talk to somebody like Uma Bharti, who says she hasn't changed her view on anything. Okay, JVL, we are out of time. One last very quick word from you. No, Vikram, I think if you look at the perspective in which Honorable Supreme Chief Justice made these observations, it certainly, there are emotions of people involved in this, and Baba is no reference for, Babar is not a religious figure for the minority, for the Muslim community. Babar is not even an Indian, and this is a mosque. As in most countries, mosques is only a place of worship,
and it doesn't have to be exactly set in the same place. All right. That's a view GVL that Narasimha Rao, many liberals How have can taken among the anyone Muslim reasonable- community itself. In But many okay, so- countries, mosques have been really demolished to build infrastructure. So Okay, therefore, GVL Narasimha Rao, one heard you has loud to and look at clear, this from heard a very Dr. liberal Ilyas perspective. loud and clear, heard Mani Shankar loud and clear, and frankly, Mr. Supreme Court judges, if you really think that there's going to be a negotiated answer on this, perhaps sounding difficult, it's not been able to find that solution all these years, still not completely clear. And we did hear what Uma Bharti had said just a little earlier. So this remains an intractable dispute, an intractable problem. And let's wait and see what the new Chief Minister of Uttar Pradesh is going to do now to try and find some sort of answers there. And that's it for the moment. We'll be back just after this break.